energy of a dipole in uniform electric field. Let's say the blue line represent a uniform electric field. Uniform mean the electric field is same at each and every point. We put a dipole. Dipole, and how much potential energy is there in the dipole, we will calculate this. Let A and B are having the same amount of charge but equal in magnitude, opposite in nature. Minus q at A plus q at B that are at distance 2a, so they are placed in the uniform electric field. The dipole moment is always, we know, from minus q charge to plus q charge. Here that is represented by the p dipole moment. So as we know, force on the charge minus q, लेट्स से ये जो चार्ज हमने ए जो है जो प्लेस किया हुआ है, फोर्स ऑन दिस चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगी. वो क्या वैल्यू होगी? माइनस क्यू, उस चार्ज की वैल्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली फोर्स ऑन द अनदर चार्ज दैट इज प्लस क्यू दैट इज प्लेस्ड एट बी, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी होगी? प्लस क्यू इंटू ई. इफ वी टेक summation of these, the net force on the dipole is 0. That is true, but the thing is that here the force are equal in magnitude, plus QE minus QE, but opposite in nature. So they will form a dipole. They will try to move about its center. How they so? Two forces are equal and opposite in nature and act at the two end of the dipole. Here this force will act in this direction because it is minus sign. Minus sign mean it is against the electric field, so it is plus sign, so it is in the direction of electric field. So we just put a direction by like this. So they will form a couple. If they form a couple, then they will exert a torque. So torque exerted by the couple, we know standardized formula, either force into perpendicular distance. Either force mean either QE, this one, or this one in magnitude only. QE into perpendicular distance. If we see AB is not perpendicular distance, from B we draw perpendicular, and that perpendicular, this perpendicular is perpendicular on both the forces, either on this or on this. So BC is the perpendicular on this plus QE, and also BC is perpendicular on to minus QE. So BC in this triangle, if this is the 2A, this is the theta, all the electric field make an angle with this dipole as a theta. So this BC comes out to be, if this is the 2A sin theta. So torque is equal to Q into 2A into E into sin 2 theta. As we know, dipole moment is Q into 2A, that is PE sin theta. If the dipole is rotated through a small angle d theta, let's say we revolve this dipole through some small angle, then work is done. कुछ वर्क करेंगे तो ही ये डाइपोल रोटेट होगा. हाउ मच वर्क? दैट dW इज इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा. जितने एंगल पे उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो PE sin theta, that is the value of torque, d theta as it is. This is the for the small angle. If I say the total work done in rotating the couple, this torque जो इस डाइपोल को पूरे को रोटेट करना, मतलब लेट्स से ये थीटा 1 पे था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसके बाद यहाँ पे कर दिया, तो अब इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा 2 हो गया. तो टोटल वर्क डन इन मूविंग a couple or a dipole from theta 1 to theta 2, we integrate dW from theta 1 to theta 2, PE sin theta d theta. इसका इंटीग्रेट किया माइनस BE cos theta from angle theta 1 to theta 2. So work done minus PE अपर लिमिट cos theta 2 minus cos theta 1. सिमिलरली PE cos, इसको जब हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो cos theta 1 minus cos theta 2 हो जाएगा. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे इस डाइपोल को, तो क्या होगा? हमने वर्क डन किया, वो क्या किस में काम आएगा? वो इस डाइपोल में आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. सो दैट इज U इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2. दैट इज एक्सप्रेशन नंबर 3. नाउ if initially the dipole is perpendicular to the electric field, but he is saying, let's say ये डाइपोल शुरू में ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लाइन ऐसे है सारी की सारी, तो ये इनिशियली थीटा 1 है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या हम कह सकते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री है, और बाद में उसका एंगल कोई थीटा बना रहा है. अच्छा जी,
तो ये वाला देखिए, if initially the dipole is perpendicular to the electric field that mean theta 1 is 90 and then brow to, अगर उसके बाद हम जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो क्या होगा, इट विल ओरिएंटेड थीटा विद सम इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरू में 90 डिग्री पे था, अब बाद में कितना आ गया थीटा, मतलब कहने का मतलब शुरू में 90 है थीटा 1 और बाद में ये वैल्यू थीटा है। वी पुट द वैल्यू पी ई कोस 90 माइनस कोस थीटा। थीटा 1 की वैल्यू शुरू में 90 थी और बाद में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मूवमेंट का एंगल क्या हो गया थीटा, तो कोस थीटा। वी सॉर्ट इट आउट, यू इज इक्वल टू दैट, हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे it becomes to be 0, so minus PE cos theta, u is equal to minus PE 4. You have to remember both this equation, remember equation 3 and equation 4. Special case, position of a stable equilibrium. There are three special case. If the theta is 0, then the dipole is said to be stable. In that case, what is the potential energy? We put the value in this expression, that minus PE cos theta, theta is equal to 0, u is equal to minus PE cos 0, that means minus PE. So in this case, this is the minimum value. How it is minimum? Because the minus is always a minimum value. When the dipole moment is perpendicular to the electric field, theta is 0, mean theta is 0, dipole moment is parallel to this electric field line. तो P की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दैट केस थीटा इज 180, वी पुट द वैल्यू इन जनरलाइज इक्वेशन माइनस पी कोस थीटा, द वैल्यू कम्स आउट टू प्लस पीई, दैट मीन अगर प्लस का साइन है इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन जो डाइपोल मोमेंट होगा हमारा इधर होगा P और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलरेडी देयर, सो इट इज लाइक दिस. So in this case, it is unstable equilibrium and the value of potential energy is to be plus PE. Similarly, position of zero energy, that mean ये zero energy कब होगी, जब उसके पास थीटा 90 होगा। मतलब क्या हुआ आपका, ये आपके डाइपोल मोमेंट हुआ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों में अगर एंगल 90 है तो वी माइनस पी कोस 90, दैट कम्स आउट टू बी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो डाइपोल मोमेंट इज perpendicular to the electric field line. That is all about this.